Hello. Hello everyone. Welcome to Promote Classes. So hello everyone. Welcome to Promote Classes. Me Ramakant Sahu. So today we'll discuss about some important questions related to quality subjects for your upcoming exams. Okay. So ଦେଖନ୍ତୁ crack OPSC with India's largest learning platform, that is okay. So crack OPSC with India's largest learning platform, that is Unacademy, right? So once you are getting the plus subscription, okay. So ଦେଖନ୍ତୁ plus features କଣ କଣ available ଅଛି Unacademy ରେ. So what are the plus features once you are taking the plus subscription? Okay, ଦେଖନ୍ତୁ. So comment box ରେ ଜଣାନ୍ତୁ sound is clear everyone. Am I audible properly? Then only we'll start. Am I audible properly? Comment box ରେ ଜଣାନ୍ତୁ. Am I audible properly? Sound आସୁଛି properly? Am I properly audible everyone? Am I properly audible everyone? Comment box ରେ ଜଣାନ୍ତୁ. Am I properly audible? Comment box ରେ ଜଣାନ୍ତୁ. Am I audible properly? Then we'll start. Okay, so these are some important plus features you will be getting once you are taking the plus subscriptions. Okay, so you can learn from your favorite teachers or favorite educators. Okay, then definitely exam preparation will be complete. Then regular doubt sessions will be there, free test series, exhaustive coverage of syllabus. So syllabus will be completely covered. Okay, then weekly free mock test. Okay, so these are some features of plus subscriptions. Okay, so these are your teachers. Okay,
So there are different teachers for different subjects. So you can enroll in this Samarthya batch. This is fundamental course for ASO and ASO secretariat exam, right? Okay, देखो so definitely there are certain other classes they are taking place for RI also. Okay, and this is a fast track course टा बुझी पारले बा fast track batch टा आपण enroll करि पारिबे. Okay, so 4th August already start हे सर. Okay, देखंतु so आपण plus subscription नियंतु so that we can get the maximum benefit out of that, right? Okay, देखंतु so okay, so what is the agenda of our today's class? We'll discuss some important quality MCQs for upcoming exams. Okay, and whatever questions I have taken, these are completely relevant for your upcoming exams like OPSC, ASO, High Court ASO, okay, High Court ASO, and your RI exams. Okay, बुझी पारले? Am I properly audible? मतलब comment box से जनान्तु. Everyone saw ma'am, am I properly audible? Sound आसुची ना नहीं properly? Let me confirm it first so that we can proceed. Sound properly आसुची कि comment box से जनान्तु मते everyone. Comment box से जनान्तु sound properly आसुची कि? Am I clearly audible? Okay, देखंतु तो today so whatever MCQs we'll be discussing regarding the polity wala section. Okay, mu तीनटा section choose करिछि. From that from those sections we'll discuss the questions, right, or MCQ. So first your directive principles of state policies, then again your panchayati raj systems. Okay, then regarding your fundamental duties. Everyone, you know that these three topics, these are very important for your exams, right? अब एक topics रू questions बारंबार repetition हुई बुझी पारले, and these are high yielding topics. आपको ने क्या हमें MCQ solve करिबा. Okay, so comment box से जनान्तु am I properly audible? Everyone, am I properly audible so that we can start the class? Okay, देखंतु first हमें कोन करिबा, मु questions पढिबी, then आपण आंसर करिबे in the comment box. Okay, then only we'll discuss about those topics. Okay, तो तार आंसर विषय में then discuss करिबा. Okay, अब आंसर जेतेला हम आंसर discuss करिबा, we'll discuss key concepts also related to that topic, right? Okay, so let's start. So this is your first question. This is related to your Panchayati Raj system in India. Okay, Panchayati Raj system in India. Again, as I told you, this is a high-yielding topic. Okay. So your first questions read: which of the following committee recommended for Panchayati Raj institutions or Panchayati Raj system in India? So India जो Panchayati Raj system आसिला, तो everyone is, you must be aware कि first from the inception it was not a part of our constitution, right? Starting रू constitution रो part नथिला Panchayati Raj system. It was constitutional amendment जेतबेले करा गला. Okay, 72 and 73 constitutional amendment act तापर कोन ताकू ऐड करा गला बुझी पारले. So 73rd and 74th constitutional amendment act, then Panchayati Raj system को Indian constitution रो गोटे part करा गला. Okay, तो देखंतु ता पूर्वरु कोन होतला, तो जो Panchayati Raj system सारा को अछि, जो Panchayati Raj system टा अछि. Okay, so there was a lot of confusion
इन इंडिया कि जो पंचायत राज सिस्टम को हम जो एडहेयर करबा किबा एक्सेप्ट करबा, सो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दैट वुड बी, राइट। तो से सिस्टम केमिते बा सेते में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आर को कोन करा गला, स्थापित करा गला। तो ई जो क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग कि जो चारटा जो अछि पुंछी समिति कि कमिटी कहबा आपण बलवंत राय मेहता कमिटी, सिंघवी कमिटी ना नॉन ऑफ। तो ये जो तीनटा कमिटी अछि व्हिच कमिटी वाज रिलेटेड टू और इज रिलेटेड टू पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। ओके, आंसर कमेंट बॉक्स में जणांतु। कमेंट बॉक्स में जणांतु आंसर साउंड आछि ना नहीं एवरीवन। कमेंट बॉक्स में आंसर जणांतु। So which will be the answer? Option A, option B, option C, option D कोट आंसर हो। So your answer is बलवंत राय मेहता कमिटी। देखो डिफरेंट डिफरेंट जो कमिटीज आर को थिले, राइट, जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आर को थिले, they provided different different kind of opinions regarding the establishment of panchayat raj system in India. Okay, so we are not going into that details कि को committee कौन recommend करथिले, that will be not beneficial for your exam, तो सेति को हमें डिस्कस करिबा नहीं। Okay, so your answer will be बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता कमिटी, this is related to what panchayat raj system in India. Okay, right, दिलीप मोहंती, सत्य रंजन पाल, मो साउंड क्लियर आछि एवरीवन? So whenever you are facing any issue, please let me know, right? दिलीप मोहंती, सत्य रंजन पाल, am I audible properly? Am I properly audible? Sound आछि ना नहीं properly? Okay, next question को जो देखो। Okay, so this is the second question and the question reads how many tires are in the panchayat raj systems of India। देखो तो हम जो पंचायत राज सिस्टम अछि it has like कोन डिफरेंट डिफरेंट टियर्स आर अछि, बुझि परले। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हम जो पंचायत राज सिस्टम ता अछि सेटा केते टियर पंचायत राज सिस्टम हमर 1 टियर 2 टियर 3 टियर ना 4 टियर। ओके, आंसर करंतु इन द कमेंट बॉक्स। Okay, दिलीप, फर्स्ट आंसर करंतु इन द कमेंट बॉक्स एंड देन लेट मी नो आपण कमेंट बॉक्स जणांतु कि को जो टियर अछि, एक्चुअली को टियर हम पंचायत राज सिस्टम रो पार्ट ताको मते कमेंट जणांतु। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ओपीएससी प्रीलिम्स 2019, राइट। सी, दिलीप मोहंती कहउजंती सी। सो दिलीप, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि से टियर आर को कोन कोन, then only we'll move to next question. Okay, so let me 3 tier. Yes, Sweta Lina Naik 3 tier. So what are those tiers? कौन कौन से? फर्स्ट लो और लोएस्ट लेवल कोटा, इंटरमीडिएट री कि मिडिल लेवल कोटा और अपर लेवल कि हाईएस्ट लेवल कोटा। 3 tier जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जणांतु। So in the lower level we have gram panchayat, right? Okay, and in the middle layer we have panchayat samiti, and in the upper or the topmost layer we have jila parishad. Okay, so these are one of 3 tiers system provided in our constitution for the panchayat raj system of India, right? ओके, तनुश्री सबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट 3 tier system arrange फर्स्ट हमर कोन ग्राम पंचायत अछि एट द लोएस्ट लेवल कि बेसिक लेवल कि ग्राउंड लेवल, वे पंचायत समिति एट द मिडिल लेवल और ताको हम कोन इंटरमीडिएट लेवल भी कहि परबा, एंड वी हैव जिला परिषद एट द टॉप लेवल कि डिस्ट्रिक्ट लेवल रे वी हैव जिला परिषद। बुझी पारले, आकु रिलेटेड भी क्वेश्चंस अछि। ओके ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन। देखो डेफिनेटली व्हेन वी आर
when we are talking about gram panchayat, panchayat samiti and jila parishad, they are established at different levels. Okay, and ताकर इलेक्शन प्रोसीड्यूर भी अच्छी डिफरेंट इलेक्शन प्रोसीड्यूर अच्छी तो द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग कि जो ग्राम पंचायत अच्छी कि ब्लॉक कमिटी कि जिला परिषद कि बोथ ए बी एंड सी कोटी द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज हेल्ड ओके डायरेक्ट इलेक्शन कोटी हेल्ड हुए यदि क्लास भल लागुची शरण मैम एवरीवन प्लीज लाइक द क्लास एंड शेयर अमंगस्ट योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम द क्लास ओके so which of the following system is established on the basis of direct election ग्राम पंचायत डायरेक्ट इलेक्शन एक्चुअली बेसिकली कोर्ट हुए ग्राम पंचायत रे हुए ब्लॉक कमिटी रे हुए ना जिला परिषद रे हुए कमेंट बॉक्स में जणांतु ओके सो योर आंसर विल बी ए देखंतु ग्राम पंचायत रे कोन हुए डायरेक्ट इलेक्शन टेक प्लेस हुए बुझी पारले ओके 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 तनुश्री सबरो ओके श्वेतालीना नायक ओके ठीक आंसर देछंती देखंतु जदी कोनसी आपन कोठी डाउट होची देन प्लीज लेट मी आस्क ओके डू आस्क सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रीड करे which of the following article is related to पंचायती राज को आर्टिकल रिलेटेड अछि पंचायती राज को आर्टिकल इज व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज योर ऑप्शंस आर बेसिकली आर्टिकल 243 आर्टिकल 324 आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 73 कमेंट बॉक्स में जणांतु आंसर व्हिच विल बी द आंसर काजल भंजा वेलकम काजल भंजा okay so article 243 is related to panchayati raj system in India right okay so article 324 is basically related to kono election commission of India okay article 124 supreme court advisory power article 73 president am union executive में union जो executive थांती तांको related okay so next question को जीवा ना श्वेतालीन डी नुह your answer will be 243 आंसर इज 243 ओके देखो एई टाइप रो क्वेश्चन केमति क्वेश्चन रेलेवेंट लागुची ना एवरीवन whoever is watching my class what do you think questions relevant अछि ना for your exam जहाँ भी आपन एग्जाम आसुची जदि रेलेवेंट लागुची देन डू हिट द लाइक बटन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जवा देखंतु ओके so what was the main purpose sorry okay so what was the main purpose behind bringing the panchayati raj system in India तो इंडिया रे पंचायती राज सिस्टम आने बार पर्पस टा कोन थला what was the objective why we needed a panchayati raj system in India okay so your options are basically to prevent criminalizations of politics a development of villages decentralization of the political power to the general peoples or to the ground level or to the bottom level or to the downtrodden section whatever you can say then to reduce the election expenses so which will be your answer तो पंचायती राज सिस्टम को इंडिया रे आनी बारो व्हाट वाज द मेन पर्पस व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट आइडिया सत्य आंसर देछंती सी तनुश्री सी ओके सो योर राइट आंसर इज answer is that is decentralization of political power to the general people देखंतु so when we are talking about a democracy so the basic idea of democracy is that each and every section of the people should be represented at the top level right okay तो से टाइम रे कोन होतला तो हम जो फेडरल स्ट्रक्चर अछि दैट फेडरल स्ट्रक्चर बेल कोन वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट राइट ओके तो से टाइम रे कोन होतला तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर थिला पंचायती राज सिस्टम पूर्व बिफोर द इंसेट और बिफोर द एडिशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम तो जो डाउन ट्रोडन पीपल थिले कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ले थिले सेठी डेमोक्रेसी बेसिकली आसी पारु नथिला ओके सो दे वर अनटच्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन नॉट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन राइट जो डेवलपमेंट हबा कथा ओके जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हबा कथा कि अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट वाज नॉट टेकिंग प्लेस इन द ग्राउंड लेवल okay and to realize that objective or to realize that goal we sought for a panchayati raj system in India बुझी पारले so basically it talks about the decentralization of political power जो political power ता centralize हेकी थिला ताको हमें trickle down करके कोन सोसाइटी रो लोअर सेक्शन को नेले बुझी पारले
ना डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस हबनी डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इज एन आउटकम ऑफ इट राइट डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस कोन गोटे आउटकम हे परिबो so development of villages is not the sole objective behind that idea बुझी पारले right is that understood everyone okay like button thumbs up provide thumbs up then is that understood everyone okay next question की जीवा second the next question okay so which schedule was added to the constitution by 73rd constitutional amendment act तो जो 73rd constitutional amendment act अछि को schedule को ऐड कला आंसर करंतु कमेंट बॉक्स रे एवरीवन so your options are 6th schedule na 7th schedule 9th schedule and 11th schedule first आपण आंसर करंतु and do let me know कि 6th schedule कोन कहे 7th schedule कोन कहे 9th schedule कोन कहे and 11th schedule कोन कहे what does okay what do they signifies ताको आपण कमेंट बॉक्स रे जणांतु okay 11th schedule okay अजय मन तो ठीक आंसर देछंती 11th schedule is related to the Panchayati Raj system okay at the 11th है आ कोन आगुड थिला हमर 12th schedule right 11th schedule कोन this is about at the village level and एटा हला कोन urban local government आप कहबा ULB urban local government बोली ULG बोली कहा जाय कोन 12th schedule को okay and 11th schedule it is related to rural local government RLG बुझी पारले तो 9th schedule कोन कहे 7th schedule कोन कहे 6th schedule कोन कहे विश्वजीत मंगराज ठीक अछि आंसर श्वेतलिन नायक ओके क्लास केमिति लागुची शरण मैम एवरीवन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ओके डेफिनेटली ताको हम म्युनिसिपैलिटी बोली भी कहिबा ओके किमा अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहसे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कमेंट बॉक्स रे जणांतु को जो शेड्यूल लिखा है ना सत्य 9th शेड्यूल नो दैट इज 11th ओके नेक्स्ट क्वेश्चन so which of the following statement is not correct related to gram sabha को नेकी को स्टेटमेंट रॉन्ग अछि ताको हमकु we have to sort out that right 6th schedule 7th concurrent list 9th land reform okay 10th schedule कोन concurrently basically कोन that is division of powers आपण कहि परिबे ओके किमा लिस्ट विषय कहि not only concurrently state list central list and concurrent list okay okay so your options are basically it is a body consisting of persons registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of the panchayat level okay कोन कहछि not correct regarding gram sabha second it is a village assembly consisting of all the registered voters in the area of the panchayat okay its power have been determined by the central government its power and functions at the village level are like state legislature at the state level okay so which is the wrong option definitely option C here is your answer because the powers are not determined by the central government okay so panchayat raj they are part of state subject they are kind of state subject आउ तांको जो election process के decide करे state legislature decide करे बुझी पारले so that's why the central government doesn't have any role to play here so it will be your answer बुझी पारले बाकी सब ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which statement is true regarding पंचायती राज सिस्टम को नेकी को स्टेटमेंट ठीक अछि ओके क्लासेस केमिति लागुछि एवरीवन ये आपण जणो नांती हम जो आस्किंग यू लिटरली हम जस्ट आस्किंग यू नो रिपीटेटिवली बट यू आर नॉट गिविंग द आंसर कि क्लास ठीक लागुछि ना नाही ओके देखंतु
So the panchayat samiti and jilla parishad should be constitution with directly elected members. Second, minimum age should be 18 years to contest the election at the panchayat level. This is very general statement. Statement 3 कौन read करूची? Election of the Panchayat Raj institution, that is PRH, is conducted under the guidance of the State Election Commission, as I told you earlier in the previous slide. Next कौन करूची? For the financial review of the Panchayat, the State Finance Commission, okay, is established after এটা 5 year about the 6 year আছে. Pardon. Okay, so which will be your answer? Again, it is asking about the true. Put a true. Actually এটা this would be not true হবা কথা. Actually এটা question হি বলছে আপনি not true করন্তু তো आंसर আসিব. না না true ঠিক আছে, ঠিক আছে. Okay, sorry, omit this, true रे ही ठीक ଅଛି. Okay, so your answer will be na sorry सत्य. Actually smile please everyone. C ही answer होबो. True जदी देखिबे आपण इलेक्शन ऑफ द पंचायत रा दिस इज डिसाइडेड और गाइडेंस का गाइडेंस रे स्टेट इलेक्शन कमिशन रे. मु एटा भूल कर देखछ, स्टेटमेंट में भूल देछि, सॉरी. इट विल बी 6 ईयर, एटा भूल अछि. दिस विल बी 5 ईयर हेले आंसर होबो. बुझि परली? ओके, सो दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. समस्त डायरेक्टली इलेक्टेड होंती नाही. बुझि परले? द चेयरमैन आर दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड अमंग द पीपल देमसेल्व्स, राइट? सो योर ऑप्शन विल बी सी. योर आंसर विल बी सी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड को जीवा. देखंतु तो देखंतु पंचायत रा जो हम जो पीआरआई अछि, पीआरआई सिस्टम रे पंचायत रा इंस्टीट्यूशंस रे तो दुईटा प्रोविजन था, राइट? गोटे थाय कोन कंपल्सरी प्रोविजन, आ गोटे हला वॉलंटरी प्रोविजन. ओके, वॉलंटरी प्रोविजन. तो कंपल्सरी प्रोविजंस इट टॉक्स अबाउट इंपोर्टेंट कंपल्सरी स्टेप दैट हैज टू टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो 80 कोन स्टेट गवर्नमेंट ये करि पारिबो नाही, दैट कैन नॉट give the excuse, but voluntary provision of state government or discretion रे थाए whether that steps will be taken by the state government or not, right? So basically तो देखंतु आउ एटा जो अछि जो reservation of women, reservation for women, it is a part of compulsory provision. तो जो reservation ता women मानकु दिया जिवो at different levels of पंचायती राज, that has to be given by the state government, right? ताकू आउ किछि कोनो excuse देई परिबो कि डिस्क्रिप्शन रे आसीबो नाही. तो जो reservation दिया जाय women मानकु सेटा केते reservation दिया जाय? 1/3 reservation, now 1/2 reservation, na 2/3, na 1/4. Which will be your answer? Ajay Mohanta 33%, 1/3 reservation, Tanushree 1/3, everyone. Dipti Banerjee. Okay, so your answer will be 1/3 reservation. Okay, 1/3 reservation provide kora jay at all levels in the, this is very important, at all the levels, right? बुझी पारले? देखंतु so 1/3 post for both a member and the chief. देखंतु जो 1/3 reservation पहुचे, this is not just for the members, for the elected members of member, eta तांकुर chief मानको पई also applicable. बुझी पारले? This is reserved for the women. Okay, जोटी जदी डाउट रहिबो, ओके मते पचारंतु. बुझी पारले? ओके ओके, एबे देखियो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज रु केटा क्वेश्चन देखंतु. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमर येटा अछि कांसेप्ट अछि को कॉन्स्टिट्यूशन रु कोन करा जायछि, यू नो एडिट करा जायछि. बुझि पारले? तो को कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिकली बोरो करछि को फीचर्स ता फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो योर ऑप्शंस आर लाइक अमेरिका, जापान, रशिया एंड ब्रिटेन. So which will be your answer? Comment box में जणांतु शरण मैम. everyone do let me know in the comment box. Okay, Russia. ओके, देखंतु आपको केमिति मन रखि पारबे. देखंतु से टाइम रे कोन रशिया, इट वाज यूएसएसआर, राइट? यूएसआर एंड यूएसएसआर व्हाट बेसिकली कोन, इट वाज अ सोशलिस्ट सोसाइटी. ओके, सोशलिस्ट नेचर सोसाइटी. तो सोशलिस्ट नेचर सोसाइटी बेसिकली कोन कहे तो जो सिटीजन सार को थाए, इट डिमांड्स फॉर
compulsory nationalization or national feelings regarding their nation बुझी पारली तो आपको भी हमन एते मन रखी परिबे ओके so your answer will be Russia at that time it was USSR अमेरिका रे में को प्रोविजन बोरो करी छे जणांतु अमेरिका फंडामेंटल राइट्स गुड अजय महंत जापान रो को प्रोविजन आसी छी जणांतु जापान रो को एंड ब्रिटेन रो हमें को प्रोविजन आनी छे ओके अब जणांतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जुडिशियल रिव्यू ओके रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन में आंसर रूल ऑफ लॉ तो बेसिकली हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर टा दैट इज बेस्ड ऑन ब्रिटेन्स मॉडल बुझी पारली ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो definitely fundamental duties from the inception of constitution were not a part of our constitution okay so they were added through certain constitutional amendment acts और से constitutional amendment act को केबे थिला को constitutional amendment थिला act थिला और को year रे आस्थिला सेटा आपण कहबे एठी कमेंट बॉक्स रे जणांतु 42nd constitutional amendment act कोई year अजय 1976 okay so this is your answer right class केमिति लागु छै everyone what are your views regarding the questions that I have taken do you think the questions are relevant for your upcoming exams Dipti Banerjee 42nd ठीक अछि आंसर if yes then please give like okay like दियंतु so that we'll get motivated and we'll try to bring more this kind of sessions which will be helpful for you right next question को जिबा thank you Ajay okay so next question at present how many fundamental duties are in the constitution at present किमा वर्तमान टाइम रे हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज आरो अछि केतेटा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि एंड अगेन मु जस्ट गुटे पचारबे आपन को फर्स्ट आर आंसर देंतु देन आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन thank you everyone thank you for your compliment right okay so first answer this question then I will ask you another question also so fundamental duties India रे एबे केतेटा fundamental duties अछि in our constitution how many fundamental rights do we have 6 7 10 11 okay we have 11 very well explained thank you 11 constitutional fundamental duties so देखो so earlier it used to be 10 fundamental duties right everyone you must be aware so the 11 constitutional amendment act केबे ऐड हेतिला let me know केबे ऐड हेतिला and 11 जो 11th जो fundamental duties ता it is related to which section so answer करंतु okay 11 last ऐड हेतिला right okay last added 86th 80 okay definitely Trupti जो भूल कहउछन आपण 2002 नुह okay sorry 86 okay 86 constitutional amendment 2002 right ठीक अछि so it basically talks about right to education right to education बुझी पारले कार ना चाइल्ड लेबर नुह सत्य चाइल्ड लेबर नुह ओके चाइल्ड लेबर भी ता अंडर आसबा बिकॉज़ बट व्हेन वी आर इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर देन इट विल लाइक मोर कॉम्प्रिहेंसिव सो बेसिकली जदि हम मोटा मोटी कहबा इट टॉक्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन ओके अंडर द एज ऑफ 14 बुझी पारले 2002 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो 15 जन लाइव रे अछंती प्लीज जते भी जन लाइव रे अछंती डू पार्टिसिपेट इन द क्विज सो दैट आउ भलो इंटरैक्टिव लागो क्लास टा ओके
Okay, এটা বঢ়িয়া 21A right to education, definitely 21A it talks about the right to education, and 21 কোন কোন article right to life and personal liberty, right? Okay, so your question is, in the Indian constitution fundamental duties are given in which article? को article fundamental duties বিষয়ে কথা কহে? Article 12 to 35, article 51, article 36 to 50 না article 50 sorry article 19? प्रीति वाय 50 ठीक आंसर ଦେଇଛନ୍ତି। सुदीक्षा मोहंती ठीक अच्छे आंसर। तनुश्री सबर ठीक अच्छे आंसर। एवरीवन ठीक आपनकर आंसर ठीक अच्छे। सो आंसर इज आर्टिकल 51 रो ए। ओके आर्टिकल 51 रो ए एंड दिस आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 बुझी पारिले। ओके एक्सटर्नल रिलेशन अजय मंतु ता अर्थ कोन? एक्सटर्नल रिलेशन माने व्हाट डज दैट मीन? ठीक अच्छे समस्त आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ओके देखो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर दोछि, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके ओके देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एडवोकेट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्मा कमिटी, सरकारिया कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी, सोन सिंह कमिटी। देखो मु आपन को ऑलरेडी कहितली कि फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट ए पार्ट राइट। ताको हमें कोन गोटे फंडामेंटल सॉरी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कोन ऐड करले। एंड देखो आरो कोन रिकमेंडेड डिफरेंट डिफरेंट कमिटी थिला, से कमिटी कोन आपको ऐड करिया पे रिकमेंड करथिले। एंड व्हिच वाज दैट कमिटी? से कमिटीटा को कमिटी थिला? वर्मा कमिटी, सरकारिया कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी ना स्वर्ण सिंह कमिटी? स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके ओके ना काजल भंजा ना भांजा व्हाट एवर। तो वर्मा कमिटी नुह, स्वर्ण सिंह कमिटी योर आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ओके देखो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्वर्ण मैम। ओके so which of the following is not the fundamental duty? Okay so okay so to safeguard the public property, to obey the parents, to make compulsory education to children from age 6 to 14, to spread brotherhood among the people. Okay so your option answer is B समस्त ठीक अछि। to obey parents एटा कोनोसी ए जोटा बहुत वेग भी अछि ना, it is very vague because it is like it is a moral duty, it is a part of your moral duty to obey your parents right, it is not a fundamental duty. Okay next question को जिबा। देखो
अगेन आपन को जस्ट पचारुची नॉर्मली क्लास ठीक लागुची कि शरण मैम एवरीवन यदि क्लास ठीक लागुची थम्स अप दियंतु प्लीज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट और टिके एनर्जेटिक लागिबो ओके क्लास ठीक लागुची ना एवरीवन फर्स्ट आंसर करंतनी तृप्ति ओके देखो which constitutional amendment act was passed to provide compulsory education to children between the age 6 to 14 okay so 82nd 83rd 86th 94th 86th will be your answer 86th constitutional amendment act of 2002 बुझी पारिले okay okay देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा okay which of the following word has not been written in the preamble of the Indian constitution this is very important okay so now एबे हम कोन क्वेश्चन हम विल सॉल्व रिगार्डिंग द प्रीएम्बल को नेकी हम क्वेश्चन सॉल्व करबा ओके मु आपन कहतली कि मु तीन चारटा टॉपिक को नेकी आई हैव चूजन द क्वेश्चंस ओके थैंक यू तृप्ति okay which of the following word has not been written in the constitution in the preamble of the constitution okay sovereign socialist democratic Indians definitely this is very easy Indians हबनी अगेन मु आपन को गुटे क्वेश्चन पचारुची तो जो 42nd constitutional amendment act of 1976 okay it added 3 words to the constitution to the preamble of our constitution और से जो वर्ड सर कहथिले कोन कोन प्लीज मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु तीनटा वर्ड ऐड करा हेतिला तीनटा वर्ड ऐड करा हेतिला एवरीवन जणांतु को वर्ड थिला दिव्यलोचन दरुवा स्माइल प्लीज तनुश्री सबर सत्य काजल बंचा एवरीवन प्लीज लेट मी नो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइक 1976 जो तीनटा वर्ड करा ऐड करा जेतिले टू द प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो तीनटा वर्ड सर को कोन थिले एटा भी क्वेश्चन सर आसे इट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट ए जो डिस्कशन करू छे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट लेट मी नो socialist okay secular integrity and socialist okay so 3 words कोन socialist secular and integrity okay so these were the 3 words that were added by 42nd constitutional amendment of 1976 बुझी पारले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा okay so the question is which statement is not correct in the case of sovereign India तो जो sovereign word टा जो मेंशन करा है छी कॉन्स्टिट्यूशन रे the sovereign India we are a sovereign nation we are a sovereign nation right we have our own sovereignty okay so what does this sovereignty basically connotes first India is not a dependent of any other country India is not a colony to any other country India can give any part of its country or its part, any part of country to any other country. India is obliged to obey the UN in its international matters or international affairs. Which will be your answer? Jaldi answer karantu. ना कोटा not correct पचारुछि I am asking about not correct which is not correct
अजय मोहंतीकर आंसर ठीक अछि इंडिया इज नॉट ऑब्वियसली देखंतु so when we talk about sovereignty what does sovereignty mean sovereignty is as a nation we are free to conduct our own affairs be it external affairs or be it internal affairs we cannot tolerate the we cannot tolerate or will not accept the interference of any other or outside body or outside countries to our internal matters, right? So your answer will be D. So when we talk about sovereignty basically it provides the freedom to conduct our own affairs be it external affairs or its internal affairs बुझी पारले अजयंकर आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखंतु KM Munshi was related to Constitution Draft Committee, Preamble Committee, Public Accounts Committee, na none of the following. जो KM Munshi ଥିଲେ, he was a member of which of the following committee? से कोन कमिटी रो मेंबर ଥିଲେ? आंसर करंतु जल्दी. प्रीवियस क्वेश्चन रे कारो किछि डाउट अछि आपण बहुत लोग भूल आंसर दैछन्ति जदि आरो कारो डाउट अछि देन आई कैन एक्सप्लेन दैट आल्सो. कारो किछि डाउट अछि कि Okay, answer it quickly. KM Munshi was related to which committee? Constitutional Committee or Constitutional Draft Committee? Na Preamble Committee, Public Accounts Committee, na none of the following. Na, the answer is Constitutional Draft Committee. Okay, so KM Munshi was related to drafting committee of the Constitution. So again, I got a question पचारुछि. Who was the head of drafting committee? जल्दी answer करंतु. This is very important. Who was the head of drafting committee? Answer will be A, huh? Constitutional drafting committee. The draft committee or drafting committee? Okay, so your okay, definitely B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar is your answer. Okay, next question को जीवा. Okay, so which part of the Constitution talks about the directive principles of state policy? The directive principle of state policy basically को part रे आपको ये करा जायछि मेंशन करा जायछि. Part 2, Part 3, Part 4 ना Part 5. Definitely, so your answer is Part 5. Sorry, very sorry, Part 4. Sorry. Part 4 of the Constitution. Okay, slip of the tongue. Okay, so next question को जीवा. समस्तंकर ठीक अछि everyone. Okay, next question. Which of the following statement is not correct regarding directive principle of state policy? Okay, if a state doesn't apply directive principle of state's policy, then a case may be filed against it in the court. Gandhism is also an element of directive principle established state policy. Okay, principles have been taken from the Constitution of Ireland. These principles are not binding on the state or they cannot be enforceable. Okay, can't be justified. Okay, so देखंतु first देखिबा if a state doesn't apply देखंतु first it is a very basic principles of state policies that or that कि
directive principle of state policy are not enforceable in nature. So what does basically directive principle of state DPSP was? This is DPSP. This is basically, it is a set of instruction to the government. It must set of instruction to the state. Okay, so the in which way the administration has to be carried out. Okay, so DPSP talks about certain principles, okay, under which the administration has to be carried out. Okay, so the first basic principle is that is DPSP cannot be enforceable. They are non-enforceable in nature. That what does it connote? यदि आपको लगला as in case of fundamental right, if you feel that your fundamental right is getting violated, then you have the options. Either you can move to High Court or you can move to Supreme Court to restore your fundamental right. Okay, so this is basically what this is enforceable character, right? But when we talk about DPSP and when we feel that DPSP is getting violated, we don't have any remedy for it, right? We cannot go into the court, we cannot file a case against it. That's why it will be your answer. It is incorrect. Okay, then DPSP is basically three types. One is Gandhian principles, socialist principles, and liberal intellectual principles. So it will be correct option. Okay, it has been taken from the Constitution of Ireland. Okay, and these are non-binding in nature. आपको binding करा है परिबो नहीं कि non-enforceable in nature. Okay. ठीक अछि everyone. Next question को जिबा. Okay, देखंतु. Which of the following is not speciality of the directive principle of state policy? कोड़ा speciality नुहो. These are constitutional directive for the state legislative, executive, and administrative areas schema matters. The directive principle of state policy, it is basically what similar to the instructions outlined in the Government of India Act 1935. DPSP can be implemented by the court in case of their violation. These are made for creation of a public of welfare state. This is very important, welfare state, and this question was asked in OPSC prelims 2019. Okay, so again actually option is similar है गला, but again we can get some new concepts from it also, right? आपण कोन आउ कोन ताको में ब्रश अप करि परिबो. First thing that this is basically a principles, directives. DPSP is basically what these are directives regarding legislative, executive, and administrative matters. Okay, then these are similar to the instructions. ताको आउ कोन set of instruction that was given by the Government of India Act 1935. Okay, then DPSP can be implemented by the court in case of their violation. एटा होबो नाही, violate हमें ताको implement करि परिबा नाही. And definitely DPSP talks about a welfare state. A welfare state has to be created within India. Okay, next question के जीवा. Okay, so the DPSP directive principles has been taken from which constitution? Britain, Canada, America, Ireland. Straight question was asked in OPSC pre 2019. Okay, definitely Ireland. Very basic questions. Ireland. It was taken from the Constitution of Ireland. Okay. Next question को जीवा. Which of the following act is covered under the elements of directive principles? तो एटा टिके आपन को डिफिकल्ट है पारे, राइट? तो जो फर्स्ट ला ban on cow slaughter, calves and other milk and draught cattle. Okay, next, all citizens have the right to get equal opportunities for the livelihood. Okay, next, equal pay for equal work for men and women, and all of the above. Which will be your answer? Jaldi answer करो, तो we are running short of time. We are about to wrap up the class.
Okay, so the answer is all of the above. The answer is all about the above. Dibalochon Dharwa answer ठीक होचे, तनुश्रींकर ठीक होचे answer all of the above. Okay. Next देखंतु the elements of the directive principle of state policy are explained को article ता तो directive principle जो अच्छी constitution है को article explain करा है article 36 to 51 from article 12 to 35 from article 5 to 11 ना none of the above. जल्दी आंसर करंतु which will be the answer. Okay, answer समस्तंकर ठीक आछि. तपस्वी दिबलोचन धरुआ अजय महंत everyone has given the right answer and that answer is from article 36 to 51 of the constitution. Okay, next question. Which of the following statements is correct about the directive principle of state policy? First, they are not moral and political. Their nature is socialist. These are automatically applied to the state. They can be legally enforced by the court. कोटा correct answer टा, कोटा correct option टा कि statement टा. Okay, so the answer is their nature is socialist kind of. देखो तो हम already मैं कहती थी DPSP और हमें DPSP जो principle है from article 36 to 51 we can categorize them into socialist वाला part, liberal intellectual L and I, and another is Gandhian principle. बुझी पारले? Okay. Okay, next question को जीवा. देखो so this is basically I will already covered some important questions. मते first आपण जते भी classes attend करले आपण comment box में जानते आपण को actually class टा केमिति लागिला. Okay, I know I might be having certain problems with regarding the language. Okay, that can be solved, no issues, but what your opinion, what's your like feedback regarding today's class and today's questions? Okay, देखो so in promote classes we are providing OPSC ASO test series in a very reasonable rate, that is 499. Okay, so we can get तो आपण कोन different sectionals पाइबे test and at the same time you can get full mock test also. Sorry, ओडिया पाई, इंग्लिश पाई, reasonable reasoning math पाई, general awareness में. क्लास केमिति लागिला आपण मते कमेंट रे जणांतु. What's your feedback? जदि written feedback दे पारिबे that would be even more good, right? देखंतु लेकिन आपण ऊपर OPSC ASO और OSC रो कोन combo test series अछि on 699 rupees. बुझी पारले? So these are very reasonable and affordable price, so you can get for it, you can opt for it, right? और कोन देखंतु हमरो मेगा सीरीज क्लासेस एक्चुअली अछि वीडियो आउट वीडियो अछि, एटा कोन वीडियो भी इंक्लूड करबो, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करबो. ओके, OS ओडिशा हाई कोर्ट ASO और OPSC ASO मेगा सीरीज टा बुझी पारले. तो क्लासेस मोर पॉलिटी क्लास केमती लागिला? सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ना पीडीएफ रे आसीबो क्वेश्चंस. इन टेस्ट सीरीज ना पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आसीबो जो. So how was today's politics class? Politics chem class केम थिला? आपन सब ठीक लागिला तो? ओके, अगेन आपन OPSC पा जदि आपन OPSC सेपरेट OPSC ASO पा कोर्स नबाक चाहछिन, देन आल्सो दैट इज अवेलेबल ऑन जस्ट 999999 रुपीस. ओके,
सेक्रेटरी डीएसओ तो आपन एटा कोर्स हाइलाइट रखो एटा आपन कॉम्प्रिहेंसिवली आपन सब सिलेबस कवर करि परिबे विल बी प्रोवाइडिंग यू टेस्ट सीरीज आल्सो ओके so explanation केमिति दिला everyone explanation how was the explanation okay that's good Ajay that's very good Ajay Mohanta okay so we are going to complete the class and the class thank you everyone thank you for joining the class नेक्स्ट क्लास रे आपण आपण प्रमोद क्लासेस को सब्सक्राइब करंतु सो दैट जो नेक्स्ट क्लास आर को YouTube रे हबो आपन को पाकू नोटिफिकेशन जिवो बुझि पारले जदि क्लास भल लागिला प्लीज शेयर करंतु हां